Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा जी। नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है, इसलिए हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050 पर। आप फोन करके सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं हमारी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. Key domestic indices closed with losses in volatile trade. Sensex sheds nearly 300 points while Nifty settles below the 19,700 level. Government approves 8.15% interest rate on Employees Provident Fund for 2022-23. Finance Minister Nirmala Sitharaman says government has instructed all banks to deal with loan repayment issues with sensitivity and humane approach. प्रमुख घरेलू सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स करीब 300 अंक टूटा, जबकि निफ्टी 19,700 के स्तर से नीचे बंद हुआ। सरकार ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर को मंजूरी दी। And let's begin with the detailed news coming out from the stock markets from Vibhuti. जी। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच उतार चढ़ाव भरे कारोबार में प्रमुख घरेलू सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,400 के स्तर से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,700 के स्तर से नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 66,385 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 79 अंक गिरकर 19,666 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई है। Key domestic indices today closed with losses in a volatile trade amid mixed cues from global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended below the 66,400 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled below the 19,700 level. The Sensex declined 299 points to finish at 66,385. The Nifty declined 79 points to end at 19,666. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.3% and the small-cap index rose 0.1%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 18 firms appreciated while 12 declined. IndusInd Bank climbed 2%, Mahindra & Mahindra rose 1.6% and the Power Grid gained 1.3%. On the other hand, ITC slumped 3.9%, Kotak Bank fell 3.8% and Tech Mahindra declined 2.8%. In sectoral indices at the BSE, 11 sectors locked gains while 9 witnessed losses.
Capital goods advanced 0.8%, while power and industrial added 0.7% each. On the other side, the FMCG sector slipped 1.7%, metal and energy slipped 0.6% each. The overall market breadth was negative as shares of 1,940 companies declined and 1,759 companies advanced. A total of 156 shares remained unchanged. Mr. Singh, we saw more than 1% fall on Friday, and this is the second consecutive session now today that we've seen a fall of today almost 300 points in the Sensex. What are the reasons for this 2 days fall that we've been seeing in the market? Actually, there is a global factors and the domestic factor behind this the downward trend in the stock market. Actually, the performance of some companies were not as per expectation. If you see, some big companies did not do very well in the Q1 numbers. On the other hand, if you see that there is a chance that US Fed may increase the interest rate again on coming Wednesday, and FPI sold some stocks, roughly 2,000 crore, and this is, I think, in a big way. Since March, FPI has invested almost 1.5 lakh crore in Indian market, but now they sold it, and it depends the way the Fed goes. At the same time, European Central Bank is also on the same pace like Fed. And what will be the commentary of the Fed, that will be more important than even if there is a interest rate increase. So all these factors are there. And we have our first listener online with us just now. And before we take the call, let me repeat the numbers on which our listeners can call us today. The numbers are 2331 4444, 2371-7106 and 2342-1050. These are Delhi numbers, so do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. And now let's take the call from Mr. K.K. Sehgal, who's calling us from Kolkata. Mr. Sehgal, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, everyone. Good evening. My question is regarding payment of capital gain tax on sale of property. Now, if I have sold my flat, say in the month of July, up to what date I have to pay the capital gain tax? Is it immediately required, or we can wait? No, it is not immediately required. You can have that proceed from the sale in a special account, and you have 2 years period. If you reinvest that money into new property, so then it will not attract the capital gain tax, and there will be a indexation. It is not necessary that how much appreciation happened that will come under the tax. There is a formula. You have to go according to that, and it is not you need not to pay immediately the capital gain tax. You have to take your time and take a call which way you want to use this money. इसी बीच उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ से हमारे साथ एक श्रोता हैं जितेंद्र जी, आपका मार्केट मंत्र में स्वागत है। प्रश्न पूछिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे सवाल ये है, जैसे कोई प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेते वक्त जो उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कितना % देना पड़ता है? देखिए, ये प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में जब आप करते हैं तो ये हर राज्य में अलग अलग वेरी करता है। कहीं 6% है, कहीं 7% है, और उससे ज्यादा भी है। और इसमें महिलाओं को ज्यादातर राज्यों में 1% की छूट मिलती है। तो ये आपके ऊपर यूपी में जो टैरिफ है वो लागू होगा, और अगर आप किसी महिला के नाम में या ज्वाइंटली इसको रजिस्टर कराते हैं तो उसमें 1% का रिलैक्सेशन मिलता है। अनुभाग जी, इसी बीच कुछ आर्थिक खबरों से अपने श्रोताओं को अवगत करा दें। रुपया का हाल। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे मजबूत होकर 81 रुपये और 82 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 101.26 पर कारोबार कर रहा था। And the next caller is from Delhi, Mr. R.K. Gupta. Mr. Gupta, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हाँ जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछे। मार्केट में ये कहते हैं कि मार्केट इज ओवर हीटेड, मार्केट इज ओवरबॉट, मार्केट इज ओवरसोल्ड, तो ये कैसे, ये टर्मिनोलॉजी क्या चीज है? जबकि
जितने शेयर परचेज करेंगे उतना ही कोई सेलर है, जितना कोई सेलर है तो उसमें कोई बायर भी है। तो ओवरसोल्ड ओवरबोट का क्या मीनिंग है इसमें? प्लीज, थैंक यू। असल में देखिए, जब शेयर बाजार में स्टॉक्स की कीमत आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ती है, उसको पीई के साथ कैलकुलेट करते हैं, उसका कितना परसेंटेज तक या कितने मल्टीप्लाई जो है उस लेवल तक ये रीजनेबल है, और उसका जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा उसका मल्टीपल टाइम्स क्रॉस कर जाता है तो मानते हैं कि शेयर जो है, जो स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यूड है। और मार्केट जब उस तरीके से ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो ओवर हीटेड उस तरीके से कहता है, जब माना जाता है कि जो फेयर वैल्यू है स्टॉक्स की उससे कहीं काफी ज्यादा है, तो दीज आर द टर्म्स यूजेस लाइक ओवर हीटेड और ओवर वैल्यूड, ये चीजें तब इस्तेमाल होती हैं। इसी बीच बेंगलुरु से हमारे एक कॉलर हैं एनआर प्रसाद। आपका स्वागत है मार्केट मंत्रा में। अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए एनआर प्रसाद जी। हाँ, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। जी, वेलकम वेलकम। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। 2 questions. See, during the month of July, FPI investment is about 43,800 crores. My question is, which is the maximum sector these money were invested? My second question is, US Fed policy of US is scheduled on Wednesday, and of course Q1 results of Indian companies also it's excellent. So would it impact the Indian stock market? These are my 2 questions. Thank you. Yes, actually, a lot of investment comes to IT sector, and the service sector is most attractive sector for FPIs, if you say. And if you see that definitely, if whatever way US Fed decision goes, it directly affects our market. And reason behind that, that inflow and outflow from the market as direct connect with the call taken by Fed regarding interest rate or tightening the liquidity or making more liquidity available. All these things are really connected with the market. And the next caller is Mr. Jitendra from Jaipur. Mr. Jitendra, welcome to the program. Please ask your question. हाँ, थैंक यू। अच्छा मैडम, ये बोला था कि फंडामेंटल स्टॉक चेक करने के लिए उसका सेल, पैट, आरओसी, आरओसीए, डेब्ट और रिटर्न ऑफ इक्विटी, इसके अलावा भी और कुछ होता है तो वो बताएं थोड़ा। नहीं, जाहिर सी बात है, जो कंपनी की अर्निंग्स है, उनका प्रॉफिट्स किस तरह से है, उसका सेल्स के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर रेवेन्यू के, वो कैसे हैं, और वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, या उस सेक्टर के ऊपर कोई आगे कोई स्ट्रेन तो नहीं आ रहा है, ये चीजें सेक्टर और कंपनीज के लिए मायने रखती हैं। साथ में जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमी भी, क्योंकि कोई भी बिजनेस साइलोज पे नहीं होता, ये ओवरऑल कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं उससे कनेक्टेड जरूर होता है। इसी बीच थाने से हमारे अगले कॉलर हैं गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी नमस्कार, आपका स्वागत। प्रश्न पूछिए। जी सर नमस्कार। रणवीर सिंह जी को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन तो सर, मैं अपना लैंड सेल किया, जमीन थोड़ा बेचा है सर, उसमें से क्या किया, वो पार्टी ने कुछ पैसा मुझे चेक से दिया और बाकी कुछ कैश दिया 20 लाख रुपए। तो सर ये मतलब बैंक में जमा करने जाओ तो वो लोग बहुत सारी इंक्वायरी करते हैं, और आयकर से तो ऐसे जो लैंड में बेच के जो पैसा आता है उससे जो छूट है, तो सर मतलब हमें मतलब क्या पार्टी से मतलब चेक से ही लेना चाहिए, और बैंक का क्या इसके बारे में रूल है, थोड़ा सा बताइए। नहीं देखिए, चेक से लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें एक तो रिस्क भी नहीं होता और चेक डिपॉजिट होगा आपका। दूसरे सवाल है कि आपने प्रॉपर्टी बेचा है, जो खासतौर से जो लैंड है, और उसका आपका जो सेल डीड और सारे ट्रांजैक्शंस का डिटेल आपके पास है, आई थिंक बैंक कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। तो आप उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 50,000 के ऊपर बैंक कहता है पैन नंबर बताइए, ये सब वो तो आजकल सारा केवाईसी होता भी है उनके पास, तो उसमें कोई ऐसा बैंक को कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। इसी बीच
हमारे साथ अतानु साहा हैं, उनसे हम प्रश्न लेंगे, लेकिन सबसे पहले एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल जान लेते हैं। एशियाई शेयर आज मिले जुले स्तर पर बंद हुए। जापान का निक्केई 1.2% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% बढ़ा। दूसरी ओर हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 2.2% गिर गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% गिरा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट 0.1% गिर गया। दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजार भी मिला जुला कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.2% गिर गया, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुट्सी और जर्मनी के डैक्स 0.09% ऊपर लगभग सपाट थे। And now let us take the call from Kolkata from Mr. Atanu Saha. Mr. Saha, welcome to the program. Please ask your question. Good evening to everybody. My question is that please explain something about our monsoon situation, sir, rainfall and the matter of irrigation, and what do we expect on upcoming the 2024. Thank you. Actually, there is a forecast for a normal monsoon this year, and right now the overall monsoon rainfall is about normal, but the distribution of rainfall geographically is uneven. Some part of the country is still waiting for rain, particularly southern peninsula and some region from the eastern side. So there is less rainfall in those areas, and that may affect our basically agricultural production in these areas. But now, even today, when we have received the data from the Ministry of Agriculture, the latest data shows that the acreage under rice is higher than last year, and coarse cereal also higher than last year, oilseed also higher than last year. So I think if the rest of the period we received a reasonable rainfall all over the country, so then Kharif will be good, and Rabi will also follow a good production if the trend continues. And let's take a look at a related story. Sowing area of rice and coarse cereals have increased under Kharif crops this year as compared to last year, according to the data released by Union Agriculture Ministry today. The sowing area of rice has increased from 175 lakh hectares to over 180 lakh hectares. The sowing area of coarse cereals has also increased from 128 lakh hectares to over 134 lakh hectares. However, the sowing areas of pulses has declined from 95 lakh hectares to around 85 lakh hectares. The overall sowing of Kharif crops has increased from 724 lakh hectares to over 733 lakh hectares this year. Mr. Singh, of course, like we just saw that the sowing area of rice and coarse cereals have increased, which is good news, but the sowing area for pulses has declined. Is that a cause for worry? Actually, we are very close to our self-sufficiency in pulses, but we have seen a drop in some particular pulses in the production in Rabi season. As already there is a gap compared to last year almost for 1 million hectare till as on date. So that may affect the supply of the pulses, and that's why we have to import more this year, but we have to wait. But some pulses, particularly like arhar, it's a long crop, so if too much delayed, then productivity will be low in that case. And like same urad also, I think it is also lagging behind. These are the things, and because pulses are very important protein diet for vegetarian in the country and large section, but government has a lot of stock of gram pulses, so that the supply can be increased through that, and price also can be controlled by issuing more and more quantity in the domestic market. NAFED has a very good stock for gram, so that is the point. इसी बीच गाजियाबाद से हमारे श्रोता हैं गोविंद जी, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछिए। जी धन्यवाद। मैं गाजियाबाद से गोविंद बात कर रहा हूं, और मुझे जानकारी ये चाहिए कि मैंने लगभग 7-8 साल पहले 2012-13 में सहारा बैंक में अपना निवेश किया था, तो अभी तक जो है उसका भुगतान मुझे नहीं प्राप्त हो पाया है। अभी कुछ दिन पहले सुना था कि कोई पोर्टल सहारा का चालू हुआ है अभी हाल ही में, तो क्या ये पैसा मेरा अब मिल सकता है? तो मिलेगा तो कैसे मिलेगा हमको?
देखिए, तो इस पे डिपेंड करता है आपने किस स्कीम में उनकी पैसा लगाया है, और कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री है उसने एक पोर्टल बनाया है, क्योंकि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। वहां पर एक पर्टिकुलर एक कॉर्पस है, उसमें से जिन लोगों का उसमें डिपॉजिट्स हैं उनको धीरे धीरे रिटर्न किया है। उसमें कैटेगरीज बनाई गई है और इसकी शुरुआत हो गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें जो प्रोविजन है, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं अगर आप उन स्कीम्स में कवर होते हैं जिनका पैसा वो है जो लौटाया जाना है। तो आप कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की साइट पे और जाकर के देख सकते हैं कि उसके लिए क्या नॉर्म्स और क्राइटेरिया है। Mr. Singh, we were talking about the area under sowing for the rice and coarse cereals, which has increased this year. So, how does it affect the overall sufficiency so far as crops are concerned, for India? Because we need. How does it affect the overall sufficiency for us? See, actually, there is a very good rainfall in Rajasthan, and a big chunk of area for coarse cereal is coming from Rajasthan, if you see. So a lot of rain-fed area is there, but there is good rain. So more and more coarse cereals comes from the area where rain-fed area is there, and some crops just need 1 or 2 rain, and then you can have a reasonable harvest. So that is the one thing, and definitely we will have more cereal available, and government is also pushing to promote the consumption of coarse cereal through Millet Year or Sriyan Yojana and like that. And in case of rice, the paddy crop acreage is almost near, little bit higher than last year, but we have to see that kind of damage is done by the flood in some part of the country, particularly northern states, and there may be a need for replanting the crop in those areas. So it may affect the productivity for the crop, because replanting means it will have less duration to grow. But there are varieties, and some advisories from the ICR is also there that if you have got delayed, so you should plant those varieties which needs less period to grow, and you can plant basically delayed plantation for these kind of crops. So it will be a mix of things, but we have to see what kind of rainfall we have in August. Basically July is the period. Now I think we are coming to close to that stage when we will have a reasonable idea about the overall crop area under the crop in the Kharif season, because it's a progressive thing. Maybe next week will be that will be higher or like that, but after certain period it stops and the crops start growing. So then I think in the next 10-15 days we will have a fair idea about the crop. And the next caller is Mr. Raju from Kolkata. But before we take his call, let us take a look at another story. The government has approved interest rate of 8.15% on deposits under the Employees Provident Fund scheme for the financial year 2022-23. According to the Employees Provident Fund Organization, EPFO, the Ministry of Labour and Employment has conveyed the approval of the central government to credit interest at the rate of 8.15% per annum for the year 2022-23 to the account of each member of the EPF scheme. Last year, the interest rate for EPF account was 8.10%. And now let us take the call from Mr. Raju from Kolkata. Mr. Raju, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, my question is, I am unemployed since the last 3 years. So, I think income tax, you don't have to pay income tax till 5 lakhs, I think, of income. So, but I've got some bank deposits, which is like, interest is above 1 lakh. So, I don't have any other income. So, do I have to pay tax? So I just want to know. No, if your income is below the threshold of income tax paying limit, so you need not to pay. You can file the return, and so that because and you have to declare in your bank also through Form 15G or so that my income is not taxable, so that there is no TDS deduction on the bank level. So that is also important for you, and usually the timing is there. Every quarter they deduct the tax, so that you can go to your bank and deposit these kind of forms, submit the form, and if you will file the return, you can declare whatever income you have, and you need not to pay if your income is below the level of charging the tax by the government rules and provisions.
इसी बीच आम जनता का ध्यान रखते हुए सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्देश सामने है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में आया है कि कुछ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण पुनर्भुगतान के मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की सलाह से ऐसे मामलों को मानवीय आधार पर निपटने के बारे में बैंकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। Moving on to commodities, oil prices were steady today as traders expected more rate hikes from US and European central banks. In intraday trade, Brent crude was trading at $81.62 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $77.60 per barrel when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध के लिए सोने की कीमतों में आज 14 रुपये की गिरावट आई। सोना 59,295 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध के लिए चांदी भी 266 रुपये की गिरावट के साथ 74,704 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $2,005 और 40 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दिन के कारोबार में चांदी $24 और 80 सेंट प्रति औंस पर गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी। Mr. Singh, a very short comment on the oil prices, because we were discussing earlier that the US Fed is to hold a meeting tomorrow and day after, and even the European Central Bank and Bank of Japan are going to be holding meetings. So the oil prices, of course, are being, also, I think that is one of the reasons for the. Would you say that that is one of the reasons the oil prices are also, we are seeing the impact on the oil prices? No, actually, as the Chinese economy is not doing very well, and there is some fear on the other big economies also. So oil will behave according to if there is a low demand, it will move accordingly. And we have one more caller online, but we do not have the time to take his call today. That is Mr. Jagmal from Delhi. Mr. Jagmal, I would request you to please call us next Monday when we have the phone-in program, and we will definitely try and take your call on that day. And that is all we have time for today. Thank you so much for coming to the studio and answering the questions and the queries of our listeners, Mr. Singh. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic indices closed with losses in volatile trade. Sensex sheds nearly 300 points while Nifty settles below the 19,700 level. Government approves 8.15% interest rate on Employees Provident Fund for 2022-23. And Finance Minister Nirmala Sitharaman says government has instructed all banks to deal with loan repayment issues with sensitivity and humane approach. प्रमुख घरेलू सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स करीब 300 अंक टूटा, जबकि निफ्टी 19,700 के स्तर से नीचे बंद हुआ। सरकार ने 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% ब्याज दर को मंजूरी दी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार ने सभी बैंकों को ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीयता से निपटने का निर्देश दिया है। And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 6:30 p.m. Do join us then for your daily dose of economic, business and finance news. Till then, from the entire team, Namaskar, goodbye. Namaskar. Market Mantra.